Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. This video is about solved exercise of Unit 1, Citizenship and Human Rights, शहरियत और इंसानी हुकूक. Question 1. Give short answers to the following questions. Question 1. Define citizenship. कि शहरियत से क्या मुराद है? Answer is citizenship is the legal status of a citizen of a person living in a particular country. कि एक शख्स की वो कानूनी हैसियत जिससे उसको किसी भी मुल्क या रियासत का फर्ज समझा जाता है, सिटीजनशिप कहलाती है. Question 2. What is meant by human rights? इंसानी हुकूक से क्या मुराद है? Answer is food, clothing and shelter are basic human rights. In addition, every human being has the right to freedom of expression and justice. These rights are called human rights. यानी खुराक, लिबास और रिहाइश इंसान के बुनियादी हुकूक हैं. इनके अलावा हर इंसान को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने, आज़ादी इजहार और इंसाफ का हक हासिल है. ये सारे इंसानी हुकूक कहलाते हैं. Question 3. List 3 etiquettes of daily life that you perform. रोज़मर्रा ज़िंदगी के कोई से 3 आदाब बताएं. Answer is Number 1. When we meet someone, greet them. Number 2. Treat everyone with good manners. For example, politeness. Number 3. Always treat your parents, teachers and elders with respect. कि जब किसी से मिले तो सलाम करें, हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आएं, अच्छा अखलाक अपनाएं, अपने वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों से हमेशा इज्जत और एहतराम से पेश आएं. Question 2. Give detailed answer to the following questions. दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें. Number 1. What is the importance of freedom of expression? कि आज़ादी इजहार की क्या अहमियत है? Answer is freedom of expression plays an important role in shaping a diverse society, creating harmony and tolerance in society and helping to promote the democratic system. Freedom of expression helps to get rid of social evils of a society. These evils cannot be eradicated unless people speak out against it. Freedom of expression does not allow people to upset or offend anyone. Question 2. Should there be freedom of expression? क्या हमें अपनी राय के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए? Yes, there must be freedom of expression because it is a fundamental human right. It plays an important role in the creation of a tolerant and diverse society. Question 3. What are the ways to establish peace? Express your views on it. कि अमन कायम करने के कौन कौन से तरीके हैं? अपने ख्यालात का इजहार करें. Answer is, in order to create peace and harmony, it is necessary to take care of certain things such as Number 1.
always treat others with kindness and compassion. Number 2, despite disagreement, respect opinions and ideas of others. Number 3, resolve the issue by apologizing in case of a mistake. Number 4, violating the rights of others leads to the misunderstanding and breakup in the relationship. Therefore, never violate the rights of people. Question 3. Write down in your copy the 3 principles of a responsible digital citizen. कि एक डिजिटल शहरी की 3 जिम्मेदारियां अपनी कॉपी में लिखें. Answer is, the principles of a responsible digital citizens are: Number 1, respect the rights of others and their opinions. Number 2, avoid spreading racism and false information. The word is racism. Number 3, avoid damage to a person's reputation and avoid gossips and half-truth. Now activity 1, make a mind map of the characteristics of a good citizen. कि एक अच्छे शहरी की खुसूसियात का माइंड मैप बनाना है. ठीक है, तो आप इन ब्लॉक्स के अंदर फर्स्ट पे लिखेंगे लॉयल टू द कंट्री. ठीक है, नंबर 2 पे लिखेंगे यूजफुल फॉर सोसाइटी. ये क्या है? गुड सिटीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 3, पेज टैक्सेस ऑनेस्टली. Number 4, protects environment from pollution. Number 5, obeys the laws and rules. Number 6, respects the rights of others. Now objective questions. Question 1, mark the correct answer using tick. The Universal Declaration of Human Rights was presented to the world in A. 1946, B. 1947, C. 1948, D. 1949. Correct option is 1948, C. Number 2, UN was established in A. 1945, B. 1946, C. 1947, D. 1948. Correct option is A. 1945. Number 3, who presented the theory of freedom of expression? A. Graham Bell, B. Einstein, C. John Stuart Mill, D. Karl Marx. Correct option is C. John Stuart Mill. Number 4, living with peace and agreement in society is called A. dispute, B. harmony, C. dispute, D. war. Correct option is B. harmony. Number 5, Khutbah-e-Hajjatul Wida was delivered on A. 6 Zilhaj, B. 8th Zilhaj, C. 10th Zilhaj, D. 9th Zilhaj. Correct option is D. 9th Zilhaj. Now question 2, put tick in front of the correct statement and cross in front of incorrect statement. Make box and off statement. जी कि दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं और जुमले के इख्तिताम पर बॉक्स बनाएं. नंबर 1, ह्यूमन राइट्स आर नॉट इक्वल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. कि इंसानी हकूक तमाम इंसानों के लिए बराबर नहीं है. क्रॉस. नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन कन्वे वंस थॉट एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स थॉट, स्पीच एंड राइटिंग. कि आज़ादी इजहार के ज़रिए से हम अपने ख्यालात और मालूमात को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. टिक. पीस एंड हार्मनी हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी. के अमन और हम आहंगी माशरे के हर फर्द पर मनफी असरात मुरतब करती है. क्रॉस.
Respecting people's personal information is not part of ethical requirement of a digital citizen. کہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے کراس. نمبر 5, violating the rights of others can lead the strained relationship. کہ دوسروں کے حقوق کا غصب کرنے سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ٹک. Now join column A to column B. Always be gentle and kind کے ساتھ میچ کریں گے آپ کہ ہمیشہ نرم اور مہربان رہیں. In conflict with others کو ریکاؤنسل کے ساتھ آپ میچ کریں گے کہ دوسروں کے ساتھ تنازع میں صلح کریں. پھر ہے in case of mistakes apologize کے ساتھ آپ میچ کریں گے کہ غلطی کی صورت میں معافی مانگ لیں. in spite of differences کے اختلافات کے باوجود کو آپ کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ respect the opinion of others کے ساتھ کہ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے کا احترام کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. یونٹ 1 کی ہم نے ایکسرسائز سالو کی. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس یونٹ کو ایکسپلین کیا تھا. اس یونٹ کی اردو میڈیم کے لیکچرز بھی اس چینل پہ موجود ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی یکساں قومی نصاب پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.